Good morning, students. Welcome to our well-renowned educational YouTube channel, New Indian Era. My name is Sitaram. I am a biology faculty. Here, I'll be taking care of botany part of your biology syllabus from both 11th and 12th standard. I'm sure you all are going to love it. So now, let's start with your 11th standard biology syllabus. Let's begin with the chapter 1, Living World. The title of this chapter, Living World, itself indicates that this chapter is related to the study of living organisms. Study of living organisms. Study of living organisms. Living organisms, they are of various types. Living organisms कई तरह के होते हैं. Those we can see in our surroundings. We can see the living organisms, various types of living organisms in our surroundings. For example, कुछ organisms होते हैं, those can survive in water. We call them aquatic animals. There are certain organisms which can survive on land. We call them terrestrial animals. And there are certain organisms which can survive on land as well as in water. We call them amphibians. So similarly, some are unicellular organisms, some are multicellular organisms, some are large size organisms. तो कुछ organisms होते हैं जिनका size बहुत ही छोटा होता है, जो कि बहुत ही small size के होते हैं. So we can say that millions of living organisms are existing on the planet Earth. Millions of living organisms. They are present on Earth. और हमें इस चैप्टर में इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करना है. बट हाउ इज इट पॉसिबल? वी नो दैट मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर इन द वर्ल्ड एंड वी हैव टू स्टडी देम. हाउ टू स्टडी देम? इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अगर स्टडी करना है तो हमें हमारा लाइफ स्पैन कम पड़ जाएगा, हमारी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी इन सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने में. क्योंकि एक सिंगल even we take a microorganism, उसके डिटेल में स्टडी करने के लिए it takes many months or even years as well. तो अगर millions of living organisms की अगर हमें स्टडी करनी है तो कितना समय लगेगा, हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी. But we have to study them. So how to study them? How to study? So in order to study all these living organisms, many scientists together, they established some standard methods. They developed some helpful tools. Our scientists have developed some helpful tools. Scientists developed helpful tools. हेल्पफुल टूल्स का मतलब होता है डिवाइसेस, उपकरण. बहुत सारे उपयोगी उपकरण जिसे हम हेल्पफुल टूल्स कहते हैं. तो साइंटिस्ट ने ऐसे कुछ हेल्पफुल टूल्स को निर्माण किया विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन स्टडी द मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिस्टमैटिकली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एंड दोज हेल्पफुल टूल्स दे आर कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिकल एड्स. इन हेल्पफुल टूल्स को ही कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स. So which are those taxonomical aids? Which are those helpful tools that we are going to study in this chapter? So now let's quickly have a outline. Let's quickly discuss about the outline of this chapter. What are topics we are going to cover in this chapter? So in this chapter, first of all, we are going to cover the topics that we are going to cover in this chapter are, we can say, the chapter outline.
The very first topic that we are going to cover in this chapter is basic principles of life. First point, basic principles of life. Very interesting topic. Under this topic, basic principles of life, we are going to study the unique characteristic features of living organisms. इसके अंदर हम स्टडी करेंगे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे फीचर्स जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही शो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल भी शो नहीं करते. सो व्हाट आर दोज फीचर्स? दोज फीचर्स आर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एजिंग प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, डेथ, and the last one is response or consciousness. Let's note them down. First, metabolism. Second, growth and development. Third, aging process. Then fourth is reproduction. Fifth is death. And the last one, sixth, is response. Response को ही कहा जाता है consciousness. Response और consciousness. All these are the important unique characteristic features shown by living organisms, only living organisms. After this, we will study the term, we are going to discuss about the term diversity. We will discuss diversity in brief. हम diversity के बारे में पढ़ेंगे. After diversity, we will study about taxonomical aids. Here we have mentioned taxonomical aids. We are going to study this taxonomical aids little bit in detail. Taxonomical aids. So which are these taxonomical aids? The taxonomical aids that are included in your syllabus are herbarium, botanical garden. Let's write them down. Herbarium, second, botanical garden, third, museum. Herbarium, botanical garden, museum, zoological parks, biodiversity parks. And the last one is key. Last taxonomical aid is key. So again, these are the 6 features: herbarium, botanical garden, museum, zoological park, biodiversity park, as well as key. So all these are the important topics that we are going to cover, that we are going to study in this chapter. So first of all, let's begin with the first topic, basic principles of life. Let's start with it. Yeah, but before we actually begin with the very first part, basic principles of life, let's quickly look at your textbook. So students, I would expect all of you to keep your textbook, pen and notebook ready whenever you are attending a lecture. आप जब भी ये क्लास अटेंड करते हो, लेक्चर अटेंड करते हो, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपने साथ टेक्स्ट बुक, पेन एंड नोटबुक रेडी रखें, so that you can read from the textbook simultaneously while the lecture is going on, as well as you can make the notes in your notebook. Does it make sense?
So here this is your textbook and we are reading from your first chapter, Living World. And here first of all we will start from this highlighted part, highlighted paragraph, which is highlighted in purple color. We will discuss about these 3 points which are mentioned in this paragraph. So what is mentioned over here? First point, what is the difference between living and non-living things? Okay, so the first point is, what is the difference between living and non-living things? First point, living and non-living things. This is the first point that we have to discuss now. So क्या डिफरेंस होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में? वेरी सिंपल. लिविंग थिंग्स शो लाइफ प्रोसेसेस. लिविंग थिंग्स के अंदर जान होती है, लाइफ प्रेजेंट होता है. इट मीन्स दे शो लाइफ प्रोसेसेस. व्हाट वी कैन से? लिविंग थिंग्स and here non-living things. So living things show life processes, and just now we discussed they show life processes. Living things, they show life processes. लाइफ प्रोसेसेस यानी ऐसी प्रोसेसेस जिसके थ्रू लाइफ एक्सप्रेस होता है, लाइफ रिवील होता है. यानी ऐसे प्रोसेस जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ प्रेजेंट है, यानी जान है, यानी ये ऑर्गेनिज्म जीवित है. सो वी कैन से दैट ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है. वी कॉल देम लाइफ प्रोसेसेस. सो लिविंग थिंग्स शो लाइफ प्रोसेसेस. एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, द एग्जाम्पल्स आर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा. So the living organisms show life processes such as growth, metabolism, reproduction, etc. Locomotion आएगा, movement, all these are the life processes. All right. एंड नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं दे कांट शो दिस लाइफ प्रोसेसेस. उनके अंदर तो जान ही नहीं होती है. दे आर नॉट लिविंग. नॉन लिविंग है, इट मीन्स उनके अंदर लाइफ नहीं है. इट मीन्स दे डू नॉट शो लाइफ प्रोसेसेस. सो द लाइफ प्रोसेसेस आर एब्सेंट. व्हाट वी कैन से? such type of phenomena, living things, non-living things do not show such type of processes. They do not show such phenomena. Alright, phenomena या processes. They do not show such type of processes. This is the very first point. Now, this is the basic difference. We did not go much deep in those into this topic. This is enough. So living things and non-living things, they show life processes. Non-living things, they do not show life processes. Now the second point, which is there in your textbook, which is the second point. Enlist the characters of living organisms. Living organisms के characters. Enlist the characters of living organisms. This question is somewhat similar to the first question, but इसको हम थोड़ा सा और कुछ डिटेल्स इस क्वेश्चन के आंसर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के? तो living organisms show some peculiar features with the help of which we can differentiate them from non-living organisms.
तो यहाँ पर तो हमने कुछ मेंशन किए हैं, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते. अपार्ट फ्रॉम दिस लाइफ प्रोसेसेस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो शो cellular structure. Cellular structure, they also show consciousness. So the characters of living organism are, यहाँ पर these characters are cellular structure, second metabolism, growth and development, then reproduction, after reproduction again consciousness. ये सारे कैरेक्टर्स केवल और केवल यानी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही शो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं. सो दीज आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स which are shown by living organisms. अब यहाँ पे ये जो मेटाबॉलिज्म है, this metabolism, growth and development, reproduction, consciousness or response, these four characteristics we are going to study under the next topic, that is basic principles of life. तो यहाँ पर ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर है इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सो दैट यू विल गेट फेयर आइडिया अबाउट व्हाट सेलुलर स्ट्रक्चर इज. कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इट मींस एग्जैक्टली व्हाट, क्या होता है. सो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो सेलुलर स्ट्रक्चर, क्या होता है सेलुलर स्ट्रक्चर? सेलुलर स्ट्रक्चर in your previous classes you must have studied that the body of all living organisms is made up of cells. सभी living organisms की body सेल से बनी हुई होती है. Let's write it down. All living organisms is made of cells. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से बनी होती है. इट मीन्स व्हाट वी कैन से, सेल्स दे आर, वी कैन से दैट सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से बनी हुई होती है. इट मीन्स दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक के ऊपर एक इस तरह से ये अरेंज होते हैं. और वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ such type of arrangement, the cells are the building blocks of living organisms. Cells are the building blocks of living organisms. So cells are the building blocks of living organism. Similarly, living organisms also perform activities. Living organisms, they also perform activities. Living organisms activities perform करते हैं, और we can say activities या फिर functions perform करते हैं. functions या activities perform करते हैं. external function या internal function, body के अंदर कुछ activities होती रहती है या फिर बाहर वो कुछ activities perform करते हैं. whatever activity, the activity performed by organism is the sum total of the activity of cells present in them. So what we can say, cells are, cells are also responsible for the functioning of living organisms. They are responsible for the functioning of living organisms. It means we can say that cells are the functional unit of living organisms. Functional unit of living organisms. Here we have mentioned that cells are the building blocks of living organisms. Living organisms की body cell से बनी हुई होती है. It means what we can say, body का structure जो है वो cell से बना है. In different terms,
we can express it as cells are the structural unit of living organisms. They are the building blocks of living organisms, जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर बनता है, बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. सो अगर बॉडी का स्ट्रक्चर सेल से फॉर्म हो रहा है तो वी कैन से दैट सेल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Structural units of living organism. तो सेल्स ये स्ट्रक्चरल यूनिट्स भी हैं, फंक्शनल यूनिट्स भी हैं. तो इन दोनों को हम कंबाइन करके एक सेंटेंस बना सकते हैं, एंड दैट सेंटेंस इज सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. They are the structural and functional units of living organism. So this is the idea about cellular structure, and this feature, cellular structure, is only and only it is shown by living organisms, living things, and not shown by non-living things or non-living object. Non-living things के अंदर cellular structure absent होता है. So this is clear because cell they are the living things. और ये लिविंग थिंग्स केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती है. दैट्स व्हाई सेलुलर स्ट्रक्चर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, इट इज ऑलवेज शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो दिस इज अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर. ये दिस सेंटेंस इज वेरी कॉमन, एंड आई एम श्योर दैट दिस सेंटेंस you all must have studied in your previous classes. So this is about cellular structure, and now we will discuss about all these remaining features of living organisms under the topic basic principles of life. I hope this much is clear so far. So now we'll discuss about the basic principles of life. Yeah, student, there is one more question. Third question is also there under this in this highlighted part. Third point is also there. We will read it now. Whether all organisms are similar and justify your answer. क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर होते हैं? Third point. Answer. Justify your answer. क्या आंसर होगा इसका? क्या सभी ऑर्गेनिज्म सिमिलर होते हैं? ऑब्वियसली नॉट. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर नहीं होते. इट मीन्स दे आर नॉट सिमिलर. तो क्यों नहीं होते सिमिलर? ऑब्वियसली हम देखते हैं कि कई सारे तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे डू एग्जिस्ट इन आवर सराउंडिंग्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स व्हाट वी कैन से देयर इज ट्रिमेंडस डाइवर्सिटी among the living organisms with respect to their body structures. Why is that so? Because there is tremendous diversity in living organisms or among the living organisms with respect to their body structure, with respect to number one, body structure,
Second, with respect to their body complexity, body structure, body complexity. Then there is also variation with respect to their grade of organization. Also, with respect to their habitat. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जैसे नहीं होते. दे शो ट्रिमेंडस वेरिएशन. वी कैन से देर इज huge variety. We can see a huge variety in these living organisms. Why is that so? Because there is a tremendous diversity among the living organisms with respect to ये living organisms एक दूसरे से डाइवर्सिटी शो करते हैं. ये अपने अंदर ही डाइवर्सिटी शो करते हैं, विविधता शो करते हैं. डाइवर्सिटी मतलब विविधता. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाइवर्सिटी यानी विविधता शो करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी स्ट्रक्चर. यानी बॉडी स्ट्रक्चर मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं their body structure is like some are thin, some are thick. कुछ organisms है जो एकदम से short है तो कुछ tall है. Some are एकदम what we can say they are small size, some are large size. So body structure. Or we can say the animals can be it can be thin, thick, small, large, short, tall. और कुछ ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सरफेस स्मूथ होता है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में बॉडी सरफेस जो होता है एक्सटर्नल सरफेस वो रफ होता है. स्मूथ एंड रफ. सो इस तरह का एटसेट्रा ऐसे कई सारे फीचर्स मिलेंगे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइवर्सिटी है विथ रिस्पेक्ट टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर. नाउ अबाउट द बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी. बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ कि दे शो वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर body complexity. It means some are unicellular तो some are multicellular. कुछ organisms है जो unicellular है. They can be unicellular और multicellular. यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. देन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं. क्या वो सिंगली लेवल अकेले रहना पसंद करते हैं या फिर कॉलोनीज बना के ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉलोनीज फॉर्म करके रहना पसंद करते हैं. वी कॉल देम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो दे कैन बी live singly or in colonies. कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं. एंड अबाउट हैबिटेट. तो हैबिटेट के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सम ऑर्गेनिज्म दे कैन लिव इन वाटर, दे कैन बी एक्वेटिक, दे कैन बी टेरेस्ट्रियल और they can be amphibians. Aquatic means water में रहने वाले, terrestrial मतलब land पर survive करने वाले, and amphibians means both water as well as land पे survive करने वाले. तो इस तरह के ये बहुत सारी वेरिएशन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, due to which we can say that all organisms they are not similar. तो इतने सारे कई सारे और इस so these are the few features with the help of which we can say that they show tremendous diversity among themselves.
Right? So this is all about the first three points which are there in your textbook. Now we know that this planet Earth, जो planet Earth है, this planet Earth is made up of biotic as well as abiotic component. Planet Earth is made up of biotic as well as abiotic components. Biotic components as well as abiotic components. Planet Earth is made up of abiotic as well as biotic components. The biotic components means the biotic components are obviously the living beings. They are the living components. They are the living things or living organisms. Biotic components means living organisms or living things, whereas abiotic components are non-living things. Non-living things or non-living objects. Non-living things or non-living objects. But how do we differentiate between these living and non-living? अभी थोड़ी देर पहले हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था अबाउट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में. तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये लाइफ प्रोसेसेस शो करते हैं. इट मीन्स दे शो लाइफ. बट हाउ डू वी डिफाइन लाइफ को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एक्चुअली दिस टर्म लाइफ कैन बी डिफाइन इन वेरियस वेज, बट देयर इज नो क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ लाइफ एज सच. लाइफ की ऐसी कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है. इट कैन बी डिफाइन इन वेरियस वेज, पर स्टैंडर्ड डेफिनेशन लाइफ की अभी तक नहीं है. However, ये जो living organisms है, these living organisms, they show unique, or we can say the peculiar features, peculiar characters with the help of which we can differentiate them from non-living organisms, non-living things or non-living objects. Living organisms या living beings ये ऐसे कुछ unique features show करते हैं जिसके जरिए with the help of which हम उनको differentiate कर सकते हैं from the non-living things. And those characters of living organisms that we are going to study under the topic basic principles of life. So let's discuss the basic principles of life. Under this, we will study the characteristics of living organisms. First point here we are going to study is metabolism. We already mentioned what all those characters that we are going to cover in this chapter: metabolism, growth and development, aging process, reproduction, death and response. So first is metabolism. So first of all, now we will discuss about metabolism. This term metabolism is taken from a Greek word metabol. From the Greek word GK means Greek word, which is that word metabol, जिसका मतलब होता है चेंज या कन्वर्जन. तो मेटाबॉलिज्म ये टर्म जो है इट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेटाबोल, जिसका मतलब होता है चेंज या कन्वर्जन. वी नो दैट आवर बॉडी,
द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ केमिकल्स. बहुत सारे केमिकल्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई होती है. इससे पहले हमने कहा था when we studied the cellular structure, that time we said body of all living organisms is made up of cells. Here we are saying the body of all living organisms is made up of chemicals. सेल से भी बनी होती है, साथ ही साथ केमिकल से भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी हुई होती है. केमिकल भी प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस केमिकल्स दे आर कंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड इन देयर बॉडी, इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इट इज मेड अप ऑफ chemicals, made of chemicals. These chemicals are continuously synthesized. Chemicals are continuously synthesized. Synthesized मतलब फॉर्मेशन होना. इन केमिकल्स का कंटिन्यूसली फॉर्मेशन होते रहता है. एंड दिस केमिकल्स आर ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बायोकेमिकल्स. तो दिस केमिकल्स दे आर कंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड एज वेल एज ट्रांसफॉर्म्ड. दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बायोकेमिकल्स. तो ये जो केमिकल्स का सिंथेसिस है एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस का फॉर्मेशन होना, केमिकल्स का फॉर्मेशन होना एंड उनको ट्रांसफॉर्मेशन होना इनटू बायोकेमिकल्स, ऑल दीज चेंजेस टुगेदर दे आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. सो ऑल दीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूसली होते रहती है. एंड द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उन सबको मिला के कहते हैं मेटाबॉलिज्म. So let's write down this definition. This is the definition of metabolism. So the definition is the sum total of all chemical reactions occurring inside the body of living organisms is known as metabolism. इसे हम कहते हैं metabolism. Alright? And this term metabolism, it is broadly divided into two categories. ये term metabolism, it is broadly divided into two categories. And those two categories are anabolism and catabolism. Anabolism and catabolism. So this term metabolism is divided into anabolism and catabolism. Now what is anabolism and catabolism? Let's try to understand some details about both of these chemical processes. Yeah, we can discuss here only. Let's write them down over here only. In short, we will write. I think it's better to write it here. We need some enough space. So we'll erase it and then write down the details about anabolism and catabolism.
anabolism and catabolism. First difference, regarding anabolism and catabolism. Anabolism, it involves building up reactions. Anabolism involves building up reactions. Building up reactions means जिसके अंदर formation होता है, synthesis होता है new compounds का. So it means it involves the synthesis. It involves building up reactions. It means it involves some synthesis. Synthesis of what? Synthesis of complex substances from simpler substances. So what we can say? It involves synthesis of complex substances from simpler substances. Synthesis of complex substances from simpler substances. This can be written in this manner. Simpler substances, they are converted into the complex substances. Simpler substances से बनेंगे complex substances का formation, से होगा complex substances का formation. Now, because in this process because in this anabolism, ये जो metabolism की process है anabolism, इसके अंदर कुछ synthesis हो रहा है, कुछ formation हो रहा है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को this anabolism is also known as constructive metabolism. This anabolism is also known as constructive metabolism. Now here, let's try to understand here. First of all, we'll discuss about some examples over here. Examples of anabolism. So what are the examples of anabolism? ऐसे कौन सी biological processes है जिसके अंदर synthesis होता है complex substances का, complex compounds का? Which are those processes? Examples. So the examples are, first example, guys, do you remember any example regarding this anabolism? ऐसी कौन सी process है जिसके अंदर synthesis होता है complex substances का, complex compound का from simpler substances? The very well known example is that you all must have studied in your previous classes is photosynthesis. First example is photosynthesis. Photosynthesis में क्या होता है? There is synthesis of food from CO2 and H2O. There is formation of food from CO2 and H2O, carbon dioxide and water molecule H2O. This process of photosynthesis ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन द सेपरेट चैप्टर 12th चैप्टर ऑफ योर सिलेबस फोटोसिंथेसिस. इस चैप्टर के अंदर हम इस प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे. बट हियर दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनफ दैट फोटोसिंथेसिस के अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है. The green plants, they possess photosynthetic pigments, chlorophyll. This chlorophyll, in the presence of sunlight, they with the help of CO2 and H2O, they form the food
food material that is in the form of glucose or we can say carbohydrate. So that we will study in this this process of photosynthesis we will study separately in the separate chapter, that is photosynthesis. Now the second example, formation of starch from glucose. Formation of starch from glucose. ग्लूकोज से बनेगा स्टार्च. देन प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. सो प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स. सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स from amino acids. One more example, formation of lipids from fatty acids and alcohol. Formation of lipids from fatty acids and alcohol. All these are the examples of anabolism. इसके अंदर कुछ ना कुछ सिंथेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है. फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन हो रहा है. हियर स्टार्च का फॉर्मेशन इज हैपनिंग. Starch formation of starch. Here the formation of proteins. Here the formation of lipids from fatty acids and alcohol. So all these are the examples of anabolism. Now let's discuss about catabolism. Catabolism क्या है? Catabolism is exactly the reverse of anabolism. इसके अंदर क्या होगा? Anabolism में building up reactions है, तो here breakdown reactions होंगी. इसके अंदर synthesis होगा, तो यहाँ पर होगा breakdown. So catabolism, these are the breakdown reaction. It involves breakdown reaction. Breakdown reactions. Breakdown reactions मतलब it means यहाँ पर क्या होगा? Now the complex substances are broken down into simpler substances, right? क्योंकि it's a breakdown reaction, तो इसमें क्या होगा? Complex substances are broken down into simpler substances. It can be written in this manner. Complex substances are broken down into simpler substances, and this is catabolism. Because इस प्रोसेस के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है, कंपाउंड्स टूट रहे, ब्रेक हो रहे हैं, दिस प्रोसेस कैटाबॉलिज्म इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म. हम इसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म. लेट्स नोट इट डाउन. इट इज ऑल्सो नोन एज destructive metabolism, right? Now example, fourth point, example. Students, do you remember any example for this catabolism, breakdown reaction? ऐसे कौन सी reaction जिसके अंदर breakdown होता है and the simpler substances are formed? The best example for catabolism is respiration. Yes. क्या होता है respiration के अंदर? Respiration के अंदर in the process of respiration there is a breakdown of food material. respiration process में food material का breakdown होगा. food material के breakdown से energy release होगी, and the energy which is released in the process of respiration, it is trapped in the form of ATP. ATP molecule के form में ये energy को store किया जाएगा, and these ATPs are utilized by living organisms to carry out various activities, to carry out various functions. So it means यहाँ पर क्या हो रहा है? respiration के अंदर there is breakdown of food material. That's why it's an example of catabolism. Example is respiration. इसमें क्या होता है? There is breakdown of food material.
it results into release of energy, ATP form होंगे, and this energy is stored in the form of ATP. So there will be ATP formation, and these ATPs are utilized for various functions or various activities. So this is what happens in case of respiration. Respiration process को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन 13th चैप्टर ऑफ योर सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड. रेस्पिरेशन सेपरेट चैप्टर है, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. In that chapter we will discuss it somewhat more in detail. So this is all about anabolism and catabolism. So we studied about metabolism, and in this metabolism, so first of all we will discuss what is metabolism. So what is metabolism? Metabolism is it's a process, or we can say it is the sum total of chemical reactions occurring inside the body of living organisms. इसे कहते हैं metabolism. Metabolism is divided into two categories, anabolism and catabolism. Anabolism क्या होता है? के अंदर होती है building up reactions, whereas catabolism के अंदर होती है breakdown reactions. तो कभी-कभी ये थोड़ा confusion हो सकता है कि anabolism और catabolism के बीच में ऐसे एग्जैक्टली कौन सी प्रोसेस के अंदर ब्रेकिंग हो रहा है, कौन से प्रोसेस के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है. थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है स्टडी करते टाइम. व्हेन यू आर गोइंग टू डू योर सेल्फ स्टडी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जिसको ध्यान में कैसे रखना है. सिंपल से ट्रिक है. ये जो वर्ड है कैटाबॉलिज्म, ये साउंड करता है कट जैसा. कैटाबॉलिज्म, कैटा कट, कट मतलब ब्रेक होना. इट मीन्स इस प्रोसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है. इस तरह से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं. अगर इसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है तो ऑब्वियसली जो दूसरी प्रोसेस है जो उसके एग्जैक्ट रिवर्स है, इसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है. तो हम इसको इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं. सो दिस इज अबाउट एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. तो एंड इसके एग्जांपल्स, इसमें एग्जांपल इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस एंड हियर रेस्पिरेशन. दिस टू एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट. दैट्स इट फॉर दिस मेटाबॉलिज्म. नाउ वी विल क्विकली गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक फॉर द सेम टॉपिक मेटाबॉलिज्म. ये सेम टॉपिक मेटाबॉलिज्म हम आपकी टेक्स्ट बुक से भी रीड करेंगे राइट नाउ. सो वेल आई डू रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आई एक्सपेक्ट कि आप सब भी अपने टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे. द फर्स्ट, नाउ हियर आई एम रीडिंग फ्रॉम दिस टॉपिक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. दिस फर्स्ट लाइन, The living being once produced or born has to survive. जो भी living beings एक बार जन्म लेते हैं, एक बार उनका बर्थ होता है तो उनको सर्वाइव करना होता है. For सर्वाइवल के लिए it needs energy and many chemical molecules. सर्वाइवल के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है as well as chemical molecules की ज़रूरत होती है. And for energy it has to perform metabolism. वो एनर्जी गेन करने के लिए उनको मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करना पड़ता है. दैट वी हैव डिस्कस्ड. मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या है, फॉर्मेशन भी है, ब्रेकडाउन भी हो रहा है. और ब्रेकडाउन से क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन में रेस्पिरेशन है, फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी. दिस इज हाउ वी गेन, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेन एनर्जी थ्रू कैटाबॉलिक रिएक्शंस. कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर व्हाट? दीज आर द रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म ओनली. दीज आर द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ओनली. Next point, metabolism is breaking up molecules. Here it is mentioned metabolism is breaking up molecules, that is catabolism, and making of new molecules. Making means formation. Formation को कहते हैं building up reactions, that is anabolism. That is we already discussed about all these two terms, anabolism and catabolism, quite in detail. So now I hope this point is very much clear to all of you. Metabolism. Now we'll move on to the next characteristic feature of living organism, that is growth and development. Students, we will continue with this topic in the next lecture. So for today, that's it. So I hope each and every point is clear to all of you, and I'm sure there won't be any doubt in your mind. So in the next lecture, we will continue from the next characteristic feature, that is growth and development. We will discuss all these things, all these remaining basic principles of life. Then we will study about diversity as well as the taxonomical aids. That's all for today. Thank you so much.